Hello and welcome. This is Preeti. Friends, today's video is about the very nutritious leafy vegetable that is Bathua saag. इसको इंग्लिश में chenopodium album बोलते हैं and it is amazingly good for your health. It is a winter essential diet because it is loaded with micronutrients and whole lot of other health benefits. So today we'll be discussing all of this health benefits and the nutrients present in this magical green leafy vegetable. So first let us know what are the nutrients present in this vegetable. Bathua saag is a rich source of vitamin C, vitamin A, vitamin B6, and it also contains protein, iron, potassium, calcium. So you see, so many nutrients and whole lot of good things in it. So you must grab it right away, and you should keep in your mind that ये winter में खाना है because it is a winter essential vegetable which is seasonal, and seasonal fruits and vegetables के तो काफ़ी फ़ायदे हैं. मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है seasonal fruits and vegetables पे, आप चेक कर सकते हैं. और क्यों खाना चाहिए? बिकॉज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और आपको बीमारियों से बचा के रखती है. अब बात करेंगे अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द साग. दिस इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज it is a good source of fiber and has laxative properties. Secondly, it also treats skin infections. And it also helps in treating parasites such as hookworms. उसके लीफ एक्सट्रैक्ट से जो भी हमको प्रोडक्ट मिलती है वो आपको पैरासाइट से जो इन्फेक्शन होते हैं उससे भी रिलीव करते हैं. और बच्चों को स्पेशली जो पेट की जो इश्यूज होते हैं, स्टमक इश्यूज, स्टमक पेन, तो उनको इस सीज़न में, विंटर सीज़न में बच्चों को ज़रूर खिलाइए ये साग इन द फॉर्म ऑफ दाल के साथ वो बनाइए. बहुत अच्छा लगता है खाने में. You serve it with rice and some vegetables to your kids and to yourself. It also treats UTI infections. And औरतों को, women को ये ज़रूर खाना चाहिए because it helps in relieving menstrual problems. अगर आपको menstruation में कुछ issues है तो ये भी treat करती है. तो ये साग काफ़ी healthy है, काफ़ी इसके health benefits है, तो आप ज़रूर इसको अपनी diet में लाइएगा. And one more important thing, it also helps in weight loss because अगर आप ये 100 ग्राम खा लेंगे आपको 43 कैलोरीज ही मिलने वाली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. And you should have it in good amount because it is a good source of fiber and so many nutrients, and this helps in weight loss. तो एक रेसिपी भी दिखाऊंगी, काफ़ी इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. So let's get started with the recipe. आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. उसका नाम है दाल साग. और ये साग, इसको बथुआ का साग बोलते हैं, जो विंटर्स में अवेलेबल होती हैं एंड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. सो ये क्लीन एंड सॉफ्ट दाल है, लेंटिल, मसूर दाल बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में रेड लेंटिल्स बोलते हैं. इसको दोनों को ऐड करना है और बनानी है हमारी अपनी दाल. फर्स्ट दाल को हम कुकर में डालेंगे. फाइन. नाउ वी विल ऐड दिस बथुआ का साग इन इट. फाइन. So quick. And then we'll add some water. Some more water and just, as you can see, just give a little stir. Okay. Mix. Then we have to add a little bit of turmeric in it. Pink Himalayan salt. इसको मिलाकर. Okay, this is how you should mix it. Cook it up to 2 whistles. Variety. So अभी इसको पकाते हैं. हमारी दाल पूरी अच्छी तरह से गल गई है, पक गई है.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इट्स फॉर फ्री। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।